Namaste. So now let us carry on from where we left off in the previous lecture, that is pleadings. Now, slight amendment in the previous lecture in Order 8, Rule 1, when I was teaching. So, Order 8 is always written statements, set-offs, and counterclaims, in which written statement ke time pe, I think during the flow of the lecture, I went in and said 120-day wali clause. So, that specific portion, that specific rule is only applicable on commercial courts that came in via the 2016 amendment. However, I'll come back to that so that you can ignore that 120-day bit and you can stick to the normal limits, the normal time limits that were given in Order 8, Rule 1. Just वो जो स्टार वाला जो चीज़ है जो आपकी बैराक में है वो वाला सब रूल आप अभी या प्रोविजो आप मत देखिएगा अभी, and then we'll come back to it. Having said that, let us start and write this down word to word. Object of the pleading. Alright. So to bring the parties to a trial by concentrating their attention on the matters in dispute. You can keep on pausing and keep on writing because these are the exact words that I want you to write. So as to narrow the controversy to the precise issues and give notice to the parties of the nature of testimony required on each side in respect of their respective cases. Net. So we started off with pleadings last time around, just an intro look. Now this is still going on for an intro look within this lecture, or maybe I'll split the lecture depending on the time I'm watching the time. So this lecture does not exceed around 30 to 40 odd minutes. We'll come to first and foremost essentials of a suit, and then from essentials of a suit we'll go ahead. तो यहाँ पे pleading के ऊपर कभी कभार कभी short note किसी भी state के exam में आपने लिखना हो, this is what you are going to write. So what exactly is the form of pleading? Now remember, you are applying for a job in which लोग आपको मनाने आ रहे हैं. You are applying for a job of a judge, no? So लोग आपको मनाने आ रहे हैं कि please मान जाइए. So in the pleading, it is to bring the parties to a trial by concentrating their attention on the matters in dispute so as to narrow the controversy to the precise. अब किसी ने एक आपके सामने प्लेंट लगाई तो डिफेंडेंट भाई वो कहता है जी मेरे खिलाफ केस है क्या, तो वो प्लीडिंग से पता चलेगा कि भैया क्या आपने प्लेंट कैसे आपने फाइल करी हुई है और उसके अंदर आपने क्या क्या लिखा हुआ है, राइट. और सामने से जो डिफेंडेंट से जो जवाब भी आया है ताकि सामने वाले को ये भी पता चले, सामने वाले के वकील को, सामने वाले खुद जो पार्टी है, that what exactly should their approach be to get relief from the court, and the court is being run by who? You. It is as simple as that, right? So to narrow the controversy to the precise issues and give notice to the parties of the nature of testimony required on each side in respect of their respective cases कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो audio alteram partem के principle पे. This is what the object of pleadings is. Now anytime that you're writing a short note, let us say that they ask you a short note on now this can be in any state's exam, ये वाली लाइनें ज़रूर जाएंगी. Now I'm sure that you won't be able to remember this word to word in the exam because there is a lot to remember. So for stuff such as this, you can write it in your own words as long as you're able to get the message across to the examiner that you know what the object of a pleading really is, right? Now we go to अच्छा pleading तो हमने कर ली, but first and foremost साथ साथ हम एक ये काम कर लेते हैं. Section 3 of the Limitation Act. Open your Barak to Section 3. This is one of the most popular sections, most cardinal sections, most important sections of the Limitation Act, जिसमें से questions की गंगा बहती है. When we enter into the depths of the Limitation Act, we'll come back to this, but pre के हिसाब से तो अभी के अभी questions tackle out कर ही लेते हैं. So bar of limitation, Section 3 ये section भी याद रखना है. This section number has to be remembered. Bar of limitation subject to the provision contained in Section 4 to 24 inclusive. Every suit, instituted, appeal, preferred, and application made after the prescribed period shall. Now, shall requires the court be dismissed, although limitation has not been set up as a defense in pleadings. So, for example, let us say a plaintiff is filed and the defendant forgets. If the defendant के वकील साहब ने देखा ही नहीं कि limitation is being hit, कि it is this suit will be hit by limitation. Read this again. Made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defense. वकील साहब ने देखा ही नहीं, वकील साहब हल्के हैं, अभी सिर्फ ग्रेजुएट हुए थे, ऐसे ही बस वकालत में आ गए, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि सबको करना ही पड़ता है at any stage, right? And that's how you learn. You make errors in that. The court shall dismiss it. So even if in your pleadings, remember pleadings is a plaint or a written statement, even if it has not been set up as a defense, it shall be dismissed. Do you see the pre-ka question? What is the court's duty? This is the court's duty. Even if
limitation is not a defense, the court shall inquire into limitation, because this is what your job as a judge first and foremost is, to see whether you have the jurisdiction. Secondly, to inquire into whether you are competent, as in you're not barred by the Limitation Act to try the suit. ठीक है जी. तो दो चीजें, as soon as the plaint is coming to you, you will start off with कि whether I have the power, authority and competency to hear the suit. Secondly, is the suit being barred by limitation, because section 3 puts this duty on to you. Alright, so this is very, very important. For the purpose of this act, a suit is instituted in an ordinary case when the plaint is presented to the proper officer. So it's talking about jurisdiction here. In the case of a pauper, that is बहुत गरीब आदमी, when his application for leave to sue as a pauper is made, and in the case of a claim against a company which is being wound up by the court, when the claimant first sends his claim to the official liquidator. Do you see the MCQ? For the purposes of the Limitation Act, a suit is instituted when option A, option B, option C, option D, all of the above. What are you going to mark? All of the above. Then the converse question pops up, which a suit is not instituted, which are under which of the following cases a suit is not instituted. ये तीन option होंगे और एक चौथा बहुत ही fictional option होगा. Alright. So read this at least twice. Pause the lecture here. Read this at least twice and add the word pauper in your vocab की list. Also English की बना रहे हैं ना साथ में. जहाँ जहाँ जो जो शब्द दिखाई देता है जिसका क्लियर वर्ड नहीं वो कैप की लिस्ट में अपने डालिए. गूगल पे जाके पॉपर का जरा एग्जैक्ट मीनिंग देखिएगा. ठीक है जी. ओके. नाउ इट सेज एनी क्लेम बाय वे ऑफ अ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड. नाउ दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स. आई विल कम बैक टू इट व्हेन वी गो इनटू सेक्शन 3 की लेंथ एंड ब्रेड्थ. ये वाला काम तो मोस्टली बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू प्लीडिंग आई थॉट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू यू. In the case of a set off on the same date as the suit in which the set off is pleaded, set off क्या है? Set off के बारे में भी हमने बात करनी है, but set off कहाँ था? Order 8. Alright, I'll say all of this again and again and again. You'll be like, अरे भाई इतनी बार बोल दिया ना एग्जाम में मेरी आवाज़ आ जाएगी पीछे से कान में कि कहाँ पे क्या थी होगा. In the case of a counter claim on the date on which the counter claim is made in court. Now what is the question? Why have I marked this? मैं प्री का काम साथ साथ कराते चले जा रहा हूँ. प्री के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आई गिव देम इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द कोर्स टू यू. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इन द केस ऑफ अ सेट ऑफ, सो ये पूरी स्टेटमेंट दे रही है टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ अ सेट ऑफ आपका पूछ लेगा, ऑप्शंस दे देगा. So on the same date as the suit in which the set off is pleaded, on the same date as the suit, on the date on which the counter claim is made in court. I'll come back to it when I'm teaching to you set off and I'm teaching you counter claim. But however, mark this. कौन सी डेट पे? सेट ऑफ वाला कह रहा है जी डेट ऑफ द सूट. काउंटर क्लेम के अंदर कह रहा है जी व्हेन द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट. जस्ट मार्क दिस इन योर बेयर एक्ट. ठीक है जी कि इन पे एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है. सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट एटलीस्ट जब प्री के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल कि हाँ भाई ये किसी ने कुछ ना कुछ तो बताया था. ठीक है जी. सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जब करेंगे अगेन आई विल कम बैक टू सेक्शन 3. आई डोंट वांट टू क्लब इन टू मेनी थिंग्स in let us say in one lecture so that you guys get disturbed. Acha, departure. Now it says no pleading shall except by way of amendment raise any new ground or claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same. Sounds something like an estoppel, not an estoppel, but sounds something like an estoppel. No, they are not allowing you to make an exact U-turn from your previous pleading. So no pleading shall except by way of amendment. So they are allowing it by way of amendment. Amendment is given where? Amendment is given under Order 6, Rule 17. ठीक है जी. याद हमेशा amendment तो मतलब हमेशा and Constitution में Part 20 Article 368 सदा साथ साथ जैसे जैसे amendment बोलेंगे वैसे वैसे काम करेंगे. So no pleading shall except by way of. So via amendment it may be allowed. Raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with previous pleadings of the party meaning either plaintiff or the defendant pleading the same. So that is you cannot make a very large U-turn कि भैया अभी तो आप ये बोल रहे थे, रिटन स्टेटमेंट में आप कुछ और बोल रहे हैं, उसके बाद आप किसी और जवाब में कुछ और बोल रहे हैं, मतलब यहाँ चल क्या रहा है? We will not allow. So unless and until the court pleadings is amended, which the court will see whether it wants to allow that or not, we shall not allow you to make a departure. Alright, so in the absence of pleading,
Evidence, if any, produced by the parties cannot be considered. जो चीज़ pleading में है ही नहीं, जिस चीज़ के बारे में आपने कोर्ट को बताया ही नहीं, पहली बात आपने कोर्ट को नहीं बताया, दूसरी बात आपने सामने वाले को भी तो नहीं बताया. You didn't tell the other party कि look, we are going to be tackling this case this way, so now you are allowed to set up your defense in that particular manner. Let us say आप कोर्ट जाके दौड़ रहे हैं एज अ प्लेंटिफ कि देखिए देखिए भाई साहब ये भी एविडेंस है, वो कहेगा ये बात तो प्लीडिंग में थी नहीं, तो सामने वाला, बिकॉज सामने वाले को यू हैवंट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू काउंटर, यू नो. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? So object is to enable the adverse party to know the case he has to meet. The object of Order 1 Rule 7 is to enable the adverse party to know the case he has to meet. Specifically, इसका भी object लिख सकता हूँ. Object of pleading overall also is to enable the adverse party to know the case he has to meet. All right. Now again, write this down word to word. In order to have a fair trial, it is imperative that the party should state the essential material facts as the other party may not be taken by surprise. Material facts के बारे में हम, अच्छा ये facts कहाँ पे? एविडेंस एक्ट हमारी फेवरेट, एवर फेवरेट, ठीक है जी. इसको वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सो दैट अदर पार्टी मे नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज. सो इवेंचुअली प्लीडिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? पार्टीज टेक्निकली स्पीकिंग दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर डायरेक्टली. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट आई एम द जज हियर, एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है. ऑलराइट, सो प्लेंटिव इज इधर, मान लेते हैं डिफेंडेंट इज इधर. प्लेंटिव आके कह रहा है साहब प्लीज इधर इसके खिलाफ, हाँ, तो वो कह रहे जी मैं तो कह रहा हूँ क्या क्या इसके खिलाफ क्या, ये प्लीडिंग ये ले लो. ओके जी, अच्छा जी. और प्लीडिंग कहाँ पे? प्लीडिंग जनरली कहाँ पर है? ऑर्डर 6, प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 7, प्लेंट ऑर्डर 8, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू गो इनटू ऑर्डर 1 आल्सो टुडे. मैं कह रहा हूँ जी ऑर्डर 6 के हिसाब से प्लीडिंग और ऑर्डर 7 के हिसाब से प्लेंट सुंदर तरीके से बता दो, ताकि मैं इनको पकड़ा दूँ और इनके जवाब की प्रतीक्षा करूँ. आइए जरा, आइए आपका क्या कहना है जी इसके बारे में. स्पेसिफिकली ये जो प्लीडिंग जो इन्होंने पकड़ाई, कल कोई आदमी कह रहा है भाई साहब सुनो सैद जी इधर, जो ये बात तो प्लीडिंग में नहीं थी लेकिन इसका ना एविडेंस ये रहा. वो कहेगा भाई साहब आपने तो ये बताया नहीं, यू डिडंट टेल मी दिस बिफोर हैंड, हाउ एम आई एबल टू सेट अ डिफेंस, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ जज आर यू इफ यू अलाउ दिस, राइट? एंड टू रेगुलेट ऑल दिस you have the CPC. If you have understood this, you pretty much have understood both criminal trials and civil proceedings. All right, and criminal trial and civil proceedings. मैं थोड़ा सा मेरे शब्दों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी. Do not make such blunders in your mains के answers. So whenever you write stuff such as this. You write it in, I won't say exact language, but similar language. So ये आपकी mains की तैयारी हो रही है, ठीक है जी. Okay. However, pleading should receive a liberal construction. No pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities. I'll say, देखिए जो आपने pleading file करी है उसके top right में जहाँ पे आपने sign करना होता है, अच्छा, do me a favor, you can pause the lecture here. अगर if you are practicing, check out some pleading या ask और वकील साहब की कभी कोई pleading की यार कोई copy दे दे जो फाइल करी हो कोर्ट में, देखो उसको देखो, सो दैट यू आर एबल टू अर्न मोर मार्क्स, बिकॉज द मोर यू सी सच स्टफ द बेटर इट इज फॉर यू. अच्छा, मैं कहता हूँ जी टॉप राइट में साइन होते हैं, तो टॉप राइट में साइन करके एक में साइन डिफर हो रहा है हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, लेटर से एक में कहीं पे नीचे आदमी अंडरलाइन करता है, उसमें उसने कोई टेढ़ी लाइन मार दिया, एंड आई एम लाइक नो दिस विल बी रिजेक्टेड, सो नो, then that will defeat the point of justice. So this is, pleadings will receive a very very liberal construction. ठीक है, I will not disallow them on hair splitting technicalities if it is violating like a lot of procedural law under CPC, then तो I'll be like please cure the defect. As a judge I'll tell them कि भैया ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, आप पूरी CPC वगैरह नहीं follow कर रहे. But I won't be straight away throwing him out. However, if it is causing, if his blunders or his errors of the plaintiff are causing prejudice against the defendant, I as a judge have a role as to not to allow that to pass through the courtroom. Remember, at the end of the day, when I retire as a judge, मेरा मतलब I am as good as my seat, so I cannot take advantage of the seat and allow someone to get harmed. That is the main role you'll be playing as a judge or a magistrate, as the job that you're applying for. All right. So order 6 rule 14 में जाइए, pleading to be signed. Every pleading shall be signed. It is usually on the top right side
by the party and his pleader if any. So by the party and his pleader if any शब्द क्यों है? Does the CPC allow you to argue without a pleader as well? If any शब्द दे रखा है, so it is certainly contemplating such a situation. We'll get to the situation in later lectures. Homework ढूंढ के रखना कि ऐसी कोई situation है कि नहीं. यहाँ पे तो पक्का मिल ही जाएगी, but कुछ काम तो खुद भी करेंगे नो. MCQ दिखाई दे Order 6 Rule 14 से. Every pleading shall be signed by who? By the party and his pleader. दोनों ऑप्शंस, ठीक है जी, मार्क करेंगे. टॉप राइट साइड में होता है, वो लिखा नहीं हुआ, दैट्स जस्ट अ कन्वेंशन. प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस फॉर अदर गुड कॉज अनेबल टू साइन द प्लीडिंग, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same to sue or to defend on his behalf. Okay, now ऑर्डर 1 के अंदर आपके रूल 15 में वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, पहले तो साइन कर, उसके बाद वेरीफाई भी कर. नीचे फुट में लिखा कि जी दीज प्लीडिंग्स वेल एवरीथिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड, और एक एफिडेविट भी लगाओगे ताकि जो आपने बोला है वो सच बोला है और आप ही प्लेंटिव हो और कोई मतलब आपको पता है कि इस केस के बारे में क्या हो रहा है. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved with satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. Alright, no such MCQs pop up from this rule. The person verifying now sub rule. So this is Order 6, Rule 15, sub rule 1, Rule 1, and then now we go to Rule 2, sub rule later. The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true. कह रहे पढ़ ले एक बारी, दोबारा पढ़ ले. What exactly are you pleading? What exactly your pleader has pleaded? इसके अंदर कोई ना कोई तो ड्राफ्ट कर ही रहा होगा, तो यू रीड कि क्या हो जा रहा है, क्योंकि जो आप बोलोगे उसी हिसाब से हम सामने वाले से बात करेंगे, आपको फिर मिलवाएंगे दोनों को कि हाँ भाई क्या चल रहा है. That is pretty much what a civil proceeding really is. The verification shall be signed by a person making and shall state the date on which the place on which it was signed. The person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleadings. तो इस पे वो क्वेश्चन बनता है प्री का, मैंने देखा हुआ है. Consider the following statements and mark which of the following are correct and incorrect. The person verifying the pleading shall also furnish an affidavit. So affidavit is a requirement. So this fact you will just have to remember. In fact, when you go in for judiciary pre, you know, ये सब चीज़ें बार बार लगातार देख के आदत ही पड़ जाती है. You know, it is just, it becomes second nature to you. So just remember, you'll have to furnish an affidavit, and furnishing an affidavit in court almost always is the case. So if they say कि भाई the person verifying the pleading, now remember, now look at their words, the person verifying the pleading, not the party, क्योंकि उन्होंने already party कह रखी कि party या person authorized by party which can verify the pleading, एक और आदमी हो सकता है, shall also furnish an affidavit in support of the pleading. So of course, well, it is true. Right. Now if we say अब हमने इतने आदमी ढूंढ लिए कि there can be a person that has been authorized by the party to basically to do the work on his behalf. So we'll just look at Order 3, recognized agents and pleaders, and very soon we are going to get this into sequence. ये सब कुछ CPC में, CPC एक बहुत ही it is quite a voluminous Bear Act, as you must have noted by now. We'll just get them all into sequence. So अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं कि कौन कहाँ पर है broadly, और उसके बाद फिर हम इसको sequence में लगाने शुरू करेंगे. और once I get to this logical deduction of sequencing it out, you will find that the puzzle fits in so beautifully that you won't have a problem with this Bear Act ever. Alright. So recognized agents and pleaders. Now why is this given in Order 3 only? Homework. Pause the lecture, check what Order 1 says. Check it. Check it right now what Order 1 says. Then check what Order 2 says. Just the title. And then check what Order 3 says. It is all in logical sequence. Alright. We will also try to lay them down in a very logical sequence very, very soon, once I get to those portions of the course. Alright. It says recognized agents. The recognized agents of the parties by whom such appearances, applications, and acts may be made or done are persons holding powers of attorney authorizing them to make and do such appearance, application, and act on behalf of such parties.
what is a power of attorney? Power of attorney कि भाई ये सामने वाला, I give him the power of being my attorney, to be my attorney, कि he or she can represent me even though I am absent from the proceedings. He or she can act on my behalf. That is what power of attorney. So general power of attorney GPA, कि भाई ऐसे लाइक जीपीए आप इशू करते हो और सामने जाके प्रॉपर्टी की सेल अगर करनी हो, दिल्ली में तो अब बैंड है जीपीए पे, अब कोई सेल नहीं है तो सेल डीड चाहिए, बट अगर जीपीए है तो सामने वाला आपके बिहाफ पे अपेयर हो सकता है। और अगर एसपी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी दैट लिमिट हो जाती है। जीपीए इज अ वेरी ब्रॉड डॉक्यूमेंट, एसपीए इज अ वेरी specific document, all right? So persons carrying on trade or business for and in the names of parties not resident within the local limits of jurisdiction of the court. So this is specifically talking about, they're talking about companies के नीचे manager, directors, managing directors, etc. that can appear on behalf of the company. Or generally speaking, just order 3 rule to recognized agents. वैसे ज़्यादा यहाँ से कुछ आता नहीं, but अगर MCQ आया, who all can be the recognized agents of a party? So order 3 rule 2 का MCQ है, of pre just mark it out in your parent. Okay. So object of order 6 rule 14 signature वाली जो चीज़ है is to prevent dispute as to whether the suit was filed by the plaintiff or with his knowledge. कल को plaintiff खड़ा हो जाए बिना साइन करे, जी ये क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है, वो कहेंगे आप plaintiff नहीं है, आप ये साइन चाहिए थे, वेरिफिकेशन भी आपने करी है, सिग्नेचर भी आपने करा, आप इधर आइए क्योंकि अब डिफेंडेंट साहब अपने वकील साहब को हायर करके आके जवाब दे रहे हैं। यू कैन नॉट मेक अ यू टर्न ऑन इट, सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, टू प्रिवेंट डिस्प्यूट एज टू वेदर द सूट वाज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ और विद हिज नॉलेज। सो ही इज, प्लेंटिफ कह रहा है जी मैं ही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लीडिंग के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, मुझे सब पता है, ये लो जी मेरा साइन, आप उसको बुलाओ डिफेंडेंट को, ठीक है जी। टेक्निकलिटी, वेल मियर प्रोसीजरल डिफेक्ट which can be cured, ज़्यादा कुछ साइन में कहीं हल्का सा एक पेज पे रह भी गया तो कोई बात नहीं, it can be cured. All right. Now, section 107. All right. Section 107 पे आप आइएगा ज़रा इधर. Subject to such conditions. अच्छा, I won't go into the section, but just read the section from the Bare Act, section 107. The High Court has very wide powers under 107, but it cannot go outside pleadings and make out a new case. जो pleading में आपने बोला है उससे High Court बाहर जा नहीं सकता है। मतलब like for example, Article 142 of the Constitution of India says Supreme Court has the power to do complete justice. It can go anywhere. Supreme Court, that is why it's supreme also. One of the reasons it's supreme. Section 107 के अंदर हाई कोर्ट के बारे में बात करें, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट जा रहा है। सो पावर्स ऑफ अपैलेट कोर्ट, सब्जेक्ट टू सच कंडीशनल लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एन अपैलेट कोर्ट शैल हैव पावर टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, टू रिमांड अ केस, टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, टू मेक एडिशनल एविडेंस, to rather to take additional evidence or to require such evidence to be taken. Do you see the MCQ? Tada! Which of the following is not a power of the appellate court in a civil trial or civil proceedings? और यहाँ पर ये आपके यहाँ पे जो काम चल रहा है, या which of the following are the powers of the appellate court, right? So that is the MCQ. Subject as aforesaid, the appellate court shall have the same powers and shall perform as nearly as some same duty as conferred and imposed by this court on courts of original jurisdiction, जहाँ पे case already लगा था, in respect of the suits instituted therein. All right. So High Court has very wide powers under 107. But it still cannot go outside the pleading. Therefore, Order 6 becomes of crucial importance. ठीक है जी? Okay. Now you go to 153. That is general power to amend. All right. The court may at any time and on such terms as to cause or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any proceeding in a suit, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by depending on such proceeding. So court has a very, very wide power to amend. Now, homework, or rather write this down in your notes. Anytime that you will be talking about Order 6, Rule 17, Amendment of Pleadings, there is no way on the planet that you will miss out read with section 153. Now all of this is very difficult to figure out on your own while you are preparing.
Alright, so this is where experience comes in play, and this is where extra marks come into play. कि किसी ने amendment of pleading, like for example they're talking to you about amendment of pleadings, let us say mains के अंदर कुछ है, and then ये बात चलती है जी अच्छा amendment of pleadings etc. And then you don't write section 153 because you never really knew it, but now since you know it, so you'll be writing it. यहाँ पे आते हैं amendment of pleadings. Amendment of pleadings के अंदर कह रहा है अगर आपके पास बेयर एक्ट दे रखी होगी मेंस में, स्पेशली डीजीएस वगैरह में तो बेयर एक्ट आती है. You're writing this word to word. The court may at any stage of the proceedings allow either. They will in fact deduct your marks. Why? Because वो कह रहा है ये किताब तो मैंने तुम्हें दे दी, तो सिर्फ आंसर लंबा कर रहा है भाई. ये नहीं होगा ना काम. आपको इसको समझाना है और उसको बताना है सामने वाले एग्जामिनर भैया को to judge you on this that you are better than the competition. Because your competition to elongate your answers, बेयर एक्ट तो सामने ही पड़ी है, उठा के वापस की वापस यही order, यही rule. You're not being tested on that. You're being tested on something else, that whether you have understood. Because if you have understood this, you will be knowing section 153 under which the courts generally have a power to amend. That is what pretty much it really is, no? Amendment of pleadings, right? पहले जैसे हमने यहाँ पे काम करा था, the court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner, on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions and controversy between the parties, provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced. But let us say that there is any defect or error any proceeding in a court, all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceedings. So the court may at any time, यहाँ पे देखिए, the court may at any time amend any defect or error, right? यहाँ पे क्या कह रहा है? The court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings, but no application for amendment under this order and rule shall be allowed after the trial has commenced. Unless the court comes to the conclusion, in spite of due diligence, the court party could not have raised the matter before the commencement of trial. So this is one exception under which the court will allow you. But this is the general power of the court. This is primarily party के ऊपर की liability के amendment के बारे में बात कर रहे हैं. Therefore, this becomes a important MCQ. क्या चक्कर है? We'll just come to the stages of the entire civil suit ताकि उससे सब कुछ clear हो जाए. But we'll start with the 4 essentials. पहले ज़रा पता तो चले कि party है कौन, right? We will be going in this course from the very birth of a suit to its very conclusion, so that you know how the CPC is used primarily in a civil suit. Okay. Now, reasons of amendment, reason या object behind this rule is क्या होता है during the trial, during आपका ये चल रहा है मामला चल रहा है now, during the trial you may just have fresh information from the parties. ऐसी कोई नई information पैदा होगी जो पहले नहीं पता थी. Existence of certain documents which were unknown to the parties at the time of institution of the suit. जब आप suit लगा रहे तब आपको ही नहीं पता था कि ऐसा भी कोई और document है. Now you want to plead and basically treat it as a material fact and want to fight over it. Well then, and if that document is related to the or rather it solves or aids in the purpose of determining the real question or issue जिसके ऊपर main आप भिड़ रहे थे, the court will allow it. The court has to allow it if it specifically aids in this purpose. So existence of certain documents which were unknown to the parties at the time of institution of the suit, which will reshape either the claim, plaintiff का या defense. Now the bar, the limitation to this is limitation, actually limitation is just the bar, is that it cannot cause injustice or prejudice to the other party. पता चले कौन सा ही कोई एक अलग ही डॉक्यूमेंट ले आए जिसका केस से कोई लेना देना नहीं था और सामने वाला कह रहा है भैया ये तो इन्होंने ओरिजिनली नहीं बताया था, अब इसके बारे में भी अब इसके भी पैसे दो, वो नहीं कोर्ट अलाउ करेगा. कोर्ट सो एज अ जज योर जॉब इज टू बी रियली अवेयर ऑफ व्हाट टू अलाउ स्पेसिफिकली विद द अमेंडमेंट्स एंड व्हाट नॉट टू अलाउ. ठीक है जी. नाउ कोर्ट्स कैन रिफ्यूज अमेंडमेंट इफ the amendment is not necessary and will not aid the court to determine the real question as in the controversy. If the amendment basically tilts the case था money के ऊपर और अब जा रहे हैं हम title of a property
के ऊपर, थैंक्स टू दिस अमेंडमेंट, सॉरी नॉट गोना हैपन. सो इफ दिस अमेंडमेंट लीड्स टू अ टोटली न्यू केस, विल नॉट अलाउ इट. वो कहेंगे जी इस केस का मामला दूसरा है, सो देयर इज अ सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन देयर, you file a separate case. Alright, so if, well, a legal right is accrued in favor of other by the lapse of time, let us say कि कुछ ऐसी कोई situation आ गई है जिसके अंदर now the other party thanks to आपका ये let us say some years passing by, the other party has gotten some inheritance of property or etc. or any other legal right. Now you can't amend your pleading जो कि आपने 5 साल पहले केस लगाया था और कह रहे हैं नहीं अब वो वाली जो प्रॉपर्टी है मुझे उसमें भी हिस्सा चाहिए, वैसे वाली कोई अमेंडमेंट नहीं अलाउड होगी. और इट लैक्स गुड फेथ एंड लैक्स बोनाफाइड्स. आई बिलीव दिस इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज. नेट न्यू कॉज ऑफ एक्शन अगर उस अमेंडमेंट से आ रहा है, दैट इज नॉट अलाउड. ऑलराइट, ओके. नाउ राइट डाउन वन केस लॉ, दैट इज Kartiyani, Karthiani versus Ramanathan, AIR 2005, Kerala 241. Alright. Just आपके नोट्स के लिए, कोई प्री में कभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट डिसमिसिंग अ प्ली ऑफ अमेंडमेंट, यू कैन नॉट टेक रिकोर्स टू आर्टिकल 227 की हाई कोर्ट अलाउ कर देगा. लेट अस से सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज डिसमिस्ड योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट की हटो परे, यहाँ से न्यू कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा इससे. टू get relief, you cannot approach the high court. And what is article 227? Just pause the lecture here, check what article 227. It is superintendence over all of the courts by the high court. You cannot go to the high court under article 227 because if your plea of amendment is changing the basic structure of the case, not basic structure constitution wala nahi, if it is changing the basic structure of the case, well then it will not be allowed, because we have to amendment तभी allowed है if it actually is aiding the court now more in determining the real question or some new information has popped up, yet the basic question remains the same. But if the basic nature of the case is being changed, we will not allow that amendment, and you cannot go to the higher court under article 227 saying कि देखिए आपका सुपरिंटेंडेंस है प्लीज इसको ऐसे बोलिए. नहीं, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होगा. ठीक है जी, होपफुली दिस इज क्लियर. ओके, नाउ सिंस मैंने बार बार कॉज ऑफ एक्शन बोला है, we'll now start dealing with cause of action. I believe आधा को घंटा हो गया इसके अंदर. अगले लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है, we'll start off with the 4 essentials of a suit. So net this lecture was all about pleadings and how you have to take a taraju and balance both side के interests and do not allow one party to completely alter the case using applications under all of these rules, and you have to be watchful. However, वो तो अच्छा प्रवचन हो गया. In the exam, since you are applying for the role of a judge, you will need to watch out that you do not allow any such amendment. You understand what the object of pleading is, and when you're writing the exam for such a post, you will mention all of these points. You will mention amendment के साथ section 153. You will have to mention it. See, everyone will be going like order 6, rule 17 amendment. आप ऐसा क्या नया अलग लेकर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये टोटली ये चेन्स ऊपर कनेक्ट कर पा रहे हैं, you will be a better candidate for the job that you're applying for. That brings me to my next lecture, which is the 4 essentials of a party. 4 essentials of a suit, not party. Party की 4 essential वैसे तो शराब, हुक्का और वो सब होती है, बट ये वाली पार्टी तो अलग है, तो इसीलिए ये वाली पार्टी नहीं, सूट है. तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसको जस्ट बाइफिकेट कर देते हैं. अर्लियर आई थॉट आई जस्ट पुट इट ऑल इन 1 hour का लेक्चर, बट ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली अलग चीज़ हो जाएगी. यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ, यू कैन टेक अ 5-10 minute ब्रीदर एंड देन कम बैक. और देख के उठना, ये मत कर देना कि हाँ बस चल रही है, हम तो ये छोटा वाला लेक्चर देख लिया और आज का काम. नहीं, ये करके जाएंगे आप आज ही, अभी. ठीक है जी, आई सी यू ऑन दिस, टेक केयर.